Good morning, students. Today I am going to learn or teachings about the resources planning. हम लोग इसके पहले भी बहुत से वीडियो देखा. अभी फर्स्ट लेसन चल रहा है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. Resources and development, the first chapter of geography and the most important chapter for not only knowledge but also for the board examination. Okay, now every topics I was discuss and explain the different topics of these lessons and every video, and now today I am going to explain about the resources planning, the next video, next topics after the sustainable development. Resources planning what is, इसमें से दो बातें पढ़ेंगे. सेकेंड पढ़ेंगे what is resources planning. Okay, what is resources planning, and second पढ़ेंगे why resources planning. Why resources planning? Two important facts. Two important facts will be studying in this topics. Okay, the first, what is resources planning? Resources planning होता क्या है? इसको हम बोलते हैं संसाधन निर्माण. अगर हम देखेंगे रिसोर्सेस प्लानिंग क्या है, आप सीधे कह सकते हैं कि रिसोर्सेस प्लानिंग, ओके, resources planning is a complex process of judicious and a skillful use of resources according to their needs and requirement. अगर हम रिसोर्सेस प्लानिंग का डेफिनेशन देंगे तो रिसोर्सेस प्लानिंग का डेफिनेशन ये होगा कि रिसोर्सेस प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रोसेस है, एक टफ प्रोसेस है. और कैसा प्रोसेस है? तो कह रहे प्रोसेस ऑफ जुडिशियस एंड स्किलफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस. कहता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम रिसोर्सेस का न्यायपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसोर्सेस प्लानिंग. हमने आपको बताया रिसोर्सेस प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन यही उठा कर डाल देता है कि रिसोर्सेस प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कमेंट्स टू दिस हम इस पे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम करेंगे. एट फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द रिसोर्सेस, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग. रिसोर्सेस प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस of judicious and skillful uses. Okay, the simple definitions of the resources planning. And now the second facts of this topic is resources. Why resources planning? क्यों जरूरी है रिसोर्सेस प्लानिंग का? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो फैक्ट्स होंगे, जो कॉजेज होगा, जो रीजंस होगा, आर द सेम रीजंस फॉर द रिसोर्सेस प्लानिंग. रिसोर्सेस प्लानिंग के लिए वही कॉजेज इंपॉर्टेंस है, वही कॉजेज है, वही रीजंस है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. But after this, I again explain to the causes of the resources planning. Okay, first हम देखेंगे तो resources planning क्यों है, why necessary, what are the reasons behind the resources planning, वो क्यों हमें करना चाहिए. सबसे पहले आप जानेंगे कि resources planning is necessary because क्यों होगा आप जानेंगे. तो फर्स्ट ये है कि the distribution of resources is unevenly
ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह समान रूप से नहीं है। हमने पिछले क्लासेस में बताया था सम रीजन इज रिच एंड some regions is poor in their resources. Okay, the first topics, the first cause, the first reasons for the resources planning, and the second अगर हम cause देखेंगे तो second cause होगा, second cause जानेंगे। the second cause for the resources planning है most resources are non-renewable resources हैं that will be exhausted after certain period. Okay, the second topics of this, the second topics है कि most resources are non-renewable resources that will be exhausted after certain period if we use of these resources continues. Okay, if we will use to these resources, if we will use to the resources continue. ओके, अगर कंटिन्यू अगर हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते रहेंगे तो देन दैट रिसोर्सेज will be the exhausted after the some times, or it may be create the different types of the problems. So these are the most important for the resources planning. Okay, next the third है it is necessary for the sustainable development. If we want to sustainable development of any region of a country, then resources planning is important and resources planning is the necessary. Such as India government make the different 5-year plans from the after the independent. 5-year plan has been created by the India government after independence for the sustainable development, and resources planning has been completed for the resources planning. ओके, भारत जैसे देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद जो है हम डिफरेंट जो है ना 5-year प्लान का फॉर्मेशन किया गया। हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाया गया और वो जो प्लान बनाया गया वो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बनाया गया, एंड वो प्लान जो किया गया वो फॉर द रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत आता है, और उस प्लानिंग के पीछे रीजन जो था वो इंडिया का डेवलपमेंट था। एट दिस टाइम 12 5-year plans has been completed, and now the नीति कमीशन है ना, नीति आयोग has now declared and formed the resources planning and planning for the development of our nations, and so we can say that resources planning is the necessary, is important, is most important for the development of the nation. So it is the most important cause for any country. Resources planning is necessary. Without the resources planning, our nation or any nation cannot be developed, equally developed. Some regions has been the developed, can be the developed, but some regions cannot be developed if we could not resources plan. अगर हम रिसोर्सेज प्लानिंग नहीं करेंगे तो कुछ क्षेत्र बहुत डेवलप्ड हो जाएंगे और कुछ क्षेत्र डेवलप नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इज द नेसेसरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सभी जगह की समाज व्यवस्था समान रूप से डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज प्लानिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, द थर्ड पॉइंट, फोर्थ कहता है रिसोर्सेज प्लानिंग it is important
for the it is important for the control of different problems. Those were created by the indiscriminately use of resources. Okay, these are the most important reasons and for the resources planning. So resources planning is the important for any nation. अब now the questions of this, अब इससे क्वेश्चन जो बोर्ड पूछता है वो पूछता है क्वेश्चन ये है कि why resources planning is the most important for a developing country. Not the name, name has been given in the questions by the board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में नाम कंट्री का नहीं देगा, सीधे पूछेगा why resources planning is a necessary or important for the developing country or any country. नाम दे देगा in for India, तो then we can write for the 4 points of these answers. Okay, so write down the questions as the homework from these the topics. The question होमवर्क है, असेसमेंट है. आप जब घर बैठे हैं इस वीडियो को देखिए, वीडियो के देखने के बाद जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास पॉसिबल है तो इस नंबर पे 9470055004 इट इज द माय व्हाट्सएप नंबर, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आंसर को आप सेंड कर सकते हैं. उसको हम चेक करेंगे और वहां जो फॉल्ट होंगे उस फॉल्ट को हम फॉल्ट आउट करेंगे. आपका जो उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स होगा उसको हम चेक कर लेंगे. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग. व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई रिसोर्सेज प्लानिंग, व्हाई रिसोर्सेज प्लानिंग is necessary for a developing country. ओके, सिंपल क्वेश्चन का और कर लेंगे और सिंपल क्वेश्चन लेंगे. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा. इसका क्वेश्चन हो जाएगा points out about the regions of resources planning. ओके, एंड नेक्स्ट और करेंगे और क्वेश्चन होगा गिव द कॉजेज. सॉरी, इसको थोड़ा और इजी कर देंगे. एक्सप्लेन एनी 3 causes of resources. Okay, resources planning. Now these are the 2 important questions from these topics. आप just a book open करेंगे, then you find the 3rd or the 4th page and the last topics the 4th page resources planning, and then you write okay. हम आपको बता रहे थे कि ये 2 important क्वेश्चन है. These are the all questions. हम इस क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हमने आपको बताया आप होमवर्क करेंगे और होमवर्क करके आंसर करके आपको इसको पेन लिखेंगे. नेक्स्ट नाउ अब रिसोर्सेज प्लानिंग पे हम एक और चीज देखेंगे कि रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हमने जैसे इसका डिफाइन किया है तो उस डिफाइन से रिलेटेड आता है, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग से क्यों नेसेसरी है. तो हम फर्स्ट पॉइंट आपको बताए थे कि द रिसोर्सेज प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. कैसे आप कहेंगे कि अनइवन है, तो हम एक टेबल बनाते हैं. आप इस टेबल से शो कर देंगे कि कैसे हमारा ये है. आप एक देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे रिसोर्स, आप यहां पर देखेंगे रिसोर्सेस. ओके, यहां पर देखेंगे रिच इन रिसोर्सेस,
सेकेंड देखेंगे द regions which are poor in resources. Poor in resources. The first resources में देखेंगे sunlight. सनलाइट में देखेंगे तो रिच इन रिसोर्सेस. सनलाइट में देखेंगे तो राजस्थान. पुअर में देखेंगे सनलाइट में अगर पुअर रीजन्स है तो हमारा पुअर रीजन्स हो जाएंगे मॉन्टेनियस states. Okay, the regions which are the rich in resources. इस टेबल को फिर से बनाते हैं. इस टेबल को हम पहले लिखते हैं नेम ऑफ स्टेट्स या रीजन. पहले वाले को ठीक कर लेंगे. सेकेंड है नेम ऑफ rich in resources and थर्ड है poor in resources. नेम ऑफ द रीजन्स में सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान is rich in the solar energy, minerals. ओके, लेकिन पुअर देखेंगे पुअर इन वाटर रिसोर्सेस. ओके, हिमाचल प्रदेश रिच इन वाटर रिसोर्सेस. पुअर इन इंफ्रास्ट्रक्चर. हिमाचल प्रदेश के बाद देखेंगे गुजरात रिच क्या है विंड एनर्जी बट पुअर इन वाटर रिसोर्सेस. ओके, झारखंड छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश इस स्टेट को देखेंगे. ओडिशा इस स्टेट को देखेंगे तो रिच इन मिनरल्स, कोल्स, आयरन ओर्स. लेकिन आप पुअर देखेंगे तो पुअर इन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, अगर आप देखेंगे लद्दाख रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट पुअर इन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, this table shows that these are the regions and these regions are rich in these resources and these resources they poor in these resources. It explains that this table says that कि हमारा कोई भी region so our any regions is not the sufficient in every resources. Every regions are the suffering from the different or the lackings of the different types of the resources and some regions are the rich in the different types of the resources but these are also suffering of the other types of the resources. So every regions are not sufficient, not independent on themselves. So resources planning is the necessary and these tables is the most important for the examination view and 1 marks questions has been the out from these the topics. Of how questions has been raised from these tables. The first question is इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं. क्वेश्चन जानिए. which state is rich in, okay, which state is rich in
cultural heritage, but poor in infrastructure. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेगा कि which state is the rich in the solar energy but suffering from the water, which region or which state is the suffering rich in the water resources but suffering from the infrastructure, which state is the rich in the wind energy but suffering from the water resources, and the others. Okay, so these are the questions has been the rise from these the tables for 1 mark, and it is the most important for your examination view. So practice on this and to learn to this the topics. Okay, now the next topics, resources planning is the resources planning is a complex process. Resources planning is a complex process. It is completed by the different labels and sub-labels, and those are related to each other. So it is complex process. Without any one labels or sub labels, this process cannot be completed. कहता है कि इसमें से किसी एक के बिना हमारा रिसोर्सेस प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो सकता है. वो डिफरेंट लेवल होता है और डिफरेंट लेवल भी सब लेवल में डिवाइड रहता है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं होगा. और जब कंप्लीट नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं कि ये रिसोर्सेस प्लानिंग एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसके लिए एवरी लेवल्स are the necessary for the completing of the resources planning. And what levels? तब जानो, there are three levels of resources planning. 3 लेवल होते हैं. अब इस रिसोर्सेस प्लानिंग के लेवल को कैसे समझेंगे? तो उसको समझने के लिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं. ये देखिए, सबसे जो पहला लेवल है इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन लेवल. दूसरे को बोलते हैं डेवलप्ड लेवल्स, और थर्ड को बोलते हैं, जो थर्ड लेवल होता है रिसोर्सेस प्लानिंग का, सेकेंड है डेवलप्ड, और थर्ड जो लेवल है रिसोर्सेस प्लानिंग को, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव लेवल्स ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग. अब ये 3 इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स है, लेवल है, और ईच लेवल्स की अपने सब लेवल्स हैं. जैसे आइडेंटिफिकेशन लेवल में देखेंगे. ओके, अब आइडेंटिफिकेशन, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. एट फर्स्ट we identify to the resources and search them.
पहला इसका सब लेवल सर्च, देन इट मीन्स सर्चिंग। सेकेंड देन आफ्टर द सर्चिंग देन measuring their quality and quantity of these resources। उस रिसोर्सेस का अब हम मेजरिंग करेंगे। क्या मेजरिंग करेंगे? तो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पहला होगा सर्चिंग, तब उसका होगा मेजरिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट है इसी का फर्स्ट लेवल का ही से थर्ड सब लेवल है मैपिंग ऑफ these resources। okay, mapping of these resources, it means the regions where these are found, कहां मिलता है। okay, the first level has the three important factors, sub labels are consist in the first level। the first searching level, second the measuring of quality and quantity level, and third the mapping। so resources planning is not a easy work, it is a complex process। resources planning is not the simple process by which we can get the resources planning। it is a tough, it is a rigid, it is a complex process by which we get the resources planning। why? by the three reasons, three steps for the completing of the resources planning। the first identification level, second the development level, and the third comparative levels of the resources planning। three important levels, and every levels of the resources planning consist the sub levels of the resources planning। एवरी के सब लेवल्स है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट का ए का वे हो गया, ये बी हो गया, एंड द सी। देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट सब लेवल्स आफ्टर कंसिस्ट इन दिस द फर्स्ट लेवल्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द लेवल ऑफ द रिसोर्सेज प्लानिंग। सो वी कैन से दैट रिसोर्सेज प्लानिंग इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड मॉडल एग्जामिनेशन। बोर्ड के लिए ये 3 और द 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है। और नेक्स्ट द सेकंड डेवलप्ड लेवल ऑफ द रिसोर्सेज प्लानिंग, I am starting to this explain। okay, the second है developed level। in this level, it means in this level we use technology and association of human for the excavation of resources in that region where first level has been completed, where the first level has been completed। पहला हम क्या करते हैं इस लेवल में, सिर्फ हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी और एसोसिएशन का यूज करते हैं, और उस मटेरियल को जहां फर्स्ट लेवल हमने कंप्लीट किया है, सर्च किया है, मैपिंग किया है, मेजरिंग किया है, उस रीजन से हम एक्सकेवेशन करना शुरू करते हैं। द सेकंड लेवल ऑफ द रिसोर्सेज, डेवलप्ड लेवल। एंड नाउ द थर्ड क्या है? थर्ड लेवल्स हम लोग का है थर्ड है कंपैरेटिव लेवल। इन दिस लेवल, इस लेवल में हम करते क्या है? इन दिस लेवल वी कंपेयर टू द excavated minerals in the
Okay, in the international market, in the international market for their use and value. Then resources planning process has completed. Okay, हमने आपको बताया 3 लेवल है. द लास्ट लेवल कंपैरेटिव लेवल है. इस लेवल में जो मिनरल हम एक्सपेक्टेड करते हैं, यानी जो सेकेंड लेवल कंप्लीट करेंगे तो उस मिनरल्स को हम इंटरनेशनल वैल्यू देखते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट आर द यूजेज ऑफ दिस रिसोर्सेस इन आवर द ह्यूमन लाइव्स एंड द इंटरनेशनल मार्केट एंड द लोकल मार्केट एंड द नेशन बेस. ओके, एंड देन द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेस. द 3 इंपॉर्टेंट स्टेज द बाय व्हिच द रिसोर्सेस प्लानिंग इज द completed. Resources planning is completed by just 3 ways, and it is not the simple ways. It is a tough process, rigid process, and a complex process. So now the important question of these topics. अब क्वेश्चन आप नोट करेंगे. क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे. फिर क्वेश्चन है होमवर्क के लिए हमारा रिसोर्सेस planning. Resources planning is a complex process. Okay, comments. Okay, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए गेस रहता है. 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. So it is the most important question. Now the next classes we will learn about the 2 important resources, land and soil. I will explain in the next classes, next video. तब तक के लिए have a nice day and thank you. Have a nice day.